1D, okay, dispersion relations in 1D crystal. Okay, so dispersion relation in monoatomic or 1D crystal. Okay, so we have seen that if there is a monoatomic chain of crystal, okay, suppose we have 3, 4, 5, okay, so these are the atoms, okay, they are connected by spring, okay, the force between the atoms is represented by Hooke's law, okay, these are invisible springs. So yesterday we have seen if we give displacement, suppose this is atom n and this is atom, so why you are calling it as springs so if it is a force? because we are assuming that in the lattice these atoms are behaving like a simple harmonic oscillator. Okay, so their force, okay, so their force will be like a kind of Hooke's law. Okay, that's why I am although there is no spring, okay, but the nature of the force is like Hooke's law because we are assuming they are simple harmonic oscillators. Okay, Okay, so sir. this is n-1 and this is n-2. Okay, so yesterday we have seen when we have displacement un, okay, so the displacement of n plus 1 atom is un plus 1. Similarly, we have seen the displacement of n-1 atom is un minus 1, and the displacement of n-2 atom is un-2. Okay, and displacement of n plus 2 atom is un plus 2. Okay, and we have calculated the force on this nth atom, and the expression for the force was Fn m d2u upon dt square. Okay, what was the expression? Beta un plus 1 plus un minus 1 minus 2 un minus 2 un. Okay, light is okay here? yes. Okay, Yes, sir. so and we have seen when we have solved this equation for traveling waves. Okay, and so we have got the relation. What was the relation? What was the relation? Omega square is Omega beta square by equals n to- 1 minus cos So theta. we have got omega is equal to omega m, okay, and sine ka by 2, okay, where our No, sin k, omega is. sine k, okay, where we have the cutoff, the maximum frequency Vm is given by 4 beta upon m. Okay, तो यहां तक हमने कल कर लिया था. So we have taken a one-dimensional atomic chain, okay, and we have calculated the force on nth atom, and from the force we have used that traveling type of solutions in this equation, and when we solve this, when we put the u value, okay, like traveling waves, okay, so we got the dispersion relation is equal to w equals to wm sine k by 2, where the maximum frequency was 4 beta by m, where beta is what? Beta क्या है? The spring constant. Spring constant. Beta is spring constant. Okay? Spring constant, and small m is what? The mass of each atom. Okay, mass of each atom, and we have also assumed the lattice constant was a. Okay, तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, and so अब आगे करते हैं. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर हाँ, और टू डायमेंशन में 3D हमारा फैक्टर 2 माइनस 2 कैसे आता है? वो नहीं है और क्या था वो? कौन सा फैक्टर? ये अभी हमने 1D के लिए निकाला ना, उसमें हमारा 1 माइनस आ रहा है ना 1 माइनस का फाइनल एक्सप्रेशन में. मतलब वो जो 1D के लिए निकाला था वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा बाय m 1 माइनस cos k डिस्कस रिलेशन. So that was yesterday you saying it was omega square m omega square, okay, 2 beta, what was there? 1 minus cos k. cos k. cos k, okay.
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना. So if हाँ you, सर, लेकिन 2D के लिए so this is मैं ट्राई कर रही थी, मेरा नहीं आ रहा है. 2 बीटा 2 माइनस cos cos kxa, okay, minus for 2D. cos ky. 2D is हाँ तो वो cos फैक्टर kya. हाँ ky. हाँ, ये 2D के लिए. अभी तो हम 1D सॉल्व कर रहे हैं ना. 2D का डाउट क्यों आया? 2D का अभी कहाँ, 2D हम कहाँ कर रहे हैं? 2D के लिए लिखा था. 2D के लिए हमने एक्सप्रेशन कल लिखा था. हमने एक्सप्रेशन में बाद में लिखा था. एक्सप्रेशन लिखा था. मैं इसलिए पूछ रही हूँ. हमारा ये 1D के लिए था. ओके, दिस वाज फॉर 1D. So if I want to write for 2D, so here will be 2 cos kxa minus cos kya. Okay, if it's 3D, it will be 3 minus cos kxa minus cos kya and minus cos kza. Okay, तो जैसे हमने 1D के लिए लिखा, ओके, हमने प्रूव नहीं किया एग्जैक्टली. हमने बोला कि जैसे 1D के लिए आ रहा है 2D और 3D के लिए भी ऐसा ही आएगा. we are not solve that one. Okay, so डाउट क्या है? हाँ, डाउट क्या है? I didn't get I'm it. trying to solve it for 2D, trying from where the two factor comes. That is, we are writing directly now. हाँ. I'm not getting it. That's all. So in 1D it was, there was 1. Okay, Yes. okay, because we are only considering only x direction. In two dimension we are considering kx and x and y both. Okay, and for 3 dimension I have just written for symmetry. Okay, we have not derived this expression. Okay, we are just directly written by seeing the expression for this 1D crystal. Okay, when you exactly derive, then only you come to know how 3 is coming. So you have to remember this one, because 1D are getting like this. For 2D and 3D they are given like this. Okay, there is no derivation. सर हाँ, बोलिए. सर एक्स वाई जेड के अलोंग लेटेस्ट कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना, लाइक ए बी एंड सी. नहीं, जनरली एक सॉलिड लेते हैं, उसका लेटेस्ट कांस्टेंट तो हम यही लेते हैं. ठीक है. यस सर, लाइक सर cos kx a cos ky b ऐसे हो सकता है. लेटेस्ट कांस्टेंट तो एक ही होता है. ओके, लेटेस्ट कांस्टेंट में Okay, sir. वेरिएशन कहाँ होता है? एक्सवर्ड डायरेक्शन में. ओके, इन जनरल इफ यू टेक आइडियल केस, वी टेक आइडियल केस, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ लेटेस्ट कांस्टेंट. ओके, अगर वो किसी स्ट्रेन के अंदर है, if you applying some force, कोई स्ट्रेन लगा हुआ है क्रिस्टल पे, then there might be change in some a value. Otherwise the solid is uniform. Okay, क्रिस्टल जैसे क्यूबिक क्रिस्टल होता है, तो उसमें यूनिट सेल का तो लेटेस्ट कांस्टेंट ए होता है सब जगह. ओके, so Yes, here just we are taking one dimensional crystals. Okay, बट सर ये ब्रेविस लैटिस के अंदर वाइब्रेशंस हम लोग देख रहे होंगे ना. सर ये जो वाइब्रेशंस हम लोग ब्रेविस लैटिस के अंदर देख रहे होंगे ना, तो हाँ, उसमें सर मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना. तो सर क्या So- ये सही है हमारा रिलेशन? so if you doubt this one, okay, assume this is a cubic crystal. Okay, generally in solid state physics, whatever simplification we do, okay, we do it for cubic crystals. Okay, because here we are not mentioning in a type of crystal here na, but it is a cubic monoclinic. अभी हम बात कर ही नहीं रहे हम लोग. Okay, we are just taking symmetric crystal, one dimensional crystal. Okay, now for one dimensional crystal we have lattice constant a. If you take same two dimensional crystal with lattice constant a, okay, then the formula will be 2 here. Same type of crystal. Okay, with lattice constant a. And if you are generalizing now, if it's a one dimensional crystal, we have 2 beta 1 minus cos kx. Okay, now if you're 2 dimensional crystal, same crystal with lattice constant a, then it is 2 minus cos kx. Okay, we are assuming that here we have same lattice constant. If there's a different, then we have to put the different values, of course. ओके सर. Okay, so आगे चले अभी. So this one, Yes. so this is our omega relation. Okay, dispersion relation. You are right. अगर वो दे रखा है कि अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं 1D को 2D में और 3D में. Okay, assuming same lattice constant. If there is a variation, there should be a b c in the expression. Okay, so now we also seen if we draw this graph. Okay, so if you draw this graph,
ओमेगा वर्सेस के, ओके, ये कैसा आएगा? वी हैव सीन, सो दिस इज से माइनस पाई बाई ए एंड दिस इज पाई बाई ए, ओके, तो ग्राफ कैसा आएगा? साइन, ओके, साइन, यस okay, so this will be the graph. If you take further ahead, अगर इसको आगे भी ड्रॉ करें, this will be minus 2 pi by a, okay. Sir, you got सर आपकी Sir, आवाज नहीं आ you're रही सर. not audible. I think we are also not audible. आज भी सर को मैसेज कर दो। सर अपना आप समझ स्क्रीन जाएंगे. पे ब्लर हो रही है। जब समझाने वाला टाइम अब शुरू होता है तब बाकी को उनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बीच बीच में स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ, हाँ, बार 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 स्क्रीन ब्लर बार हो रही है। हाँ। Okay, now I'm audible. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so now for long wavelength region, okay, so I just explaining that k is equal to 2 pi by lambda, okay. So if the region is long wavelength region, that means your k will be small, okay. So if k is small, then sin k a by 2 को हम क्या लिख सकते हैं? If k is small, k by 2 only. A by 2. so we can write only k a by 2, okay. So my omega will be omega m, okay, k a by 2, okay. Now if we see this expression, okay, so I can write w is equal to wm a by 2 k, okay. So we can see the omega frequency is proportional to k, okay. So this type of behavior is generally seen in elastic medium, continuous elastic medium, okay. So in long wavelength region, our 1D crystal is behaving exactly like a elastic continuous medium, okay. So we can write in low wavelength region 1D crystal or our crystal behaves like continuous elastic medium, okay. सर So फिर इस केस में तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी भी इक्वल होनी चाहिए। so let us calculate, okay. So say this is, so we can write, because it's proportional, we can write this is equal to vs k, okay, where vs is the velocity of velocity, okay. So vs is equal to vm a by 2, okay. Now let us calculate phase velocity and group velocity, okay. So what is the phase velocity? कैसे डिफाइन होती है phase velocity? ओमेगा बाय के Omega by k. Omega by k, okay. So this is my phase velocity. So इस expression से if I calculate omega by k, okay, that will become what? Vs, okay, Vs or Vm maximum frequency a by 2, okay. Now if I want to calculate group velocity Vg का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा बाय डीके। Okay, so d omega by dk, okay. So if you do d omega by dk, again it will come vs, okay. So vm a by 2, okay. That means our so that means my vp is equal to vg, okay. सर ये So VS क्या है सर? vs velocity है, okay, velocity of waves, okay, which should come, which actually should come equal to the group velocity, okay. Sound का sound अगर इसके crystal में solid है, like I told you here,
our system is behaving like a 1D crystal, okay, like elastic medium. So elastic medium में जो waves का velocity होता है, okay, generally sound waves, okay, that is the velocity, yes, velocity of sound wave in elastic medium, okay. So now this here we can see our Vp is equal to Vg, okay, that means our system, okay, is dispersionless. The 1D crystal in long wavelength region, okay, for long wavelength region, for long wavelength region, it behave like a dispersionless medium. There is no dispersionless medium, okay. So just now I have derived this relation. Sir, if Vp is equals to Vg, Hmm. how it behaves dispersionless medium? Because here velocity velocity is not depending on lambda, okay, है जी wavelength पे depend नहीं कर रही है phase आपकी. velocity is equal to group velocity. हाँ. So because phase velocity is equal to group velocity, that means our system is dispersionless, okay, clear? काम ना होने का So I think some doubt is there. गर्दन पैर का दर्द कैसा Excuse me. Shivangi Tomar, turn off your mic. Okay. So now yesterday we discussed dispersion, like I told you in prism, if you are shining white light, okay, so each component wavelength is have different velocity in medium, okay, because that refractive index of the material depends on lambda, okay. So here also, so if we so here our group velocity and phase velocity, they are independent of lambda, okay, that's why we're getting Vp equal to Vg. So this is a dispersionless medium. I think you must have read this thing in quantum mechanics. No? Yes, sir. ये चीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी पहले? हाँ, sir. Okay. So now just now we have derived this formula for 1D case, okay. Can you derive this phase relation for 3D case? Okay. So now for 3D crystal, okay, can you derive this relation, dispersion relation, 3D crystal, dispersion relation, okay, for long wavelength region, for long wavelength please derive for 3D case. So for 3D case, what we have yesterday we discussed, for 3D we have m 2 beta. omega square 2 फिर क्या आगे Beta by 2 Two. beta. yes 1 3 minus minus. 3 of minus. 3 3 minus minus. 3 minus kxa minus cos kya minus cos kza, okay. So derive this dispersion relation for long wavelength region. How you do? So if wavelength is long, okay, then your k is small, Yes, sir. correct? So you can put approximation here. So you can open this expression by cos series, okay. So this if I write here, since this is long wavelength region, my k is small, so I can write 3 minus cos को क्या लिख सकते हैं? 1 minus k x square a. 1 minus kx a upon 2. 2 का स्क्वायर, Yes, sir. स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? Plus kx is kx 1 Squared by 2. सर 2 नहीं आएगा सर, हम्म? 2 नहीं आएगा, kx a का होल स्क्वायर होगा सर. अच्छा x square by 2, okay. So kx square a square by 2, okay. Similarly, Yes, sir. I can add here also for cos ky, okay. So that will be 1 minus ky square a square by 2, okay. Similarly, I can write the expansion for cos kz, that will be 1 minus k z square a square by 2, okay. So
now solve it further. So इसको अगर हम solve it further, what we'll get? So 3 minus kx square plus ky square plus kz square a square by M omega square. Okay, so we'll get this will be 2 beta. Okay, 3 से 3 cancel हो जाएगा. Okay, so what we'll get? This 1. Okay, 1 this cancel, so it will be kx square k x square a square by 2 plus k y square a square by 2 plus k z square a square by 2. Okay, so this I can write 2 beta. Okay, a square common ले लो, 2 भी common आ जाएगा. So and so we will get kx square ky square plus kz square. Okay, इसको रब कर दूं मैं. yes sir. So if you solve this one, okay, what we'll get? 2 से 2 cancel. Okay, beta a square k square. Okay, and if we calculate our omega square, omega, so omega क्या आ जाएगा? Omega will be what? Beta by m under root beta by m a k. Okay, now just transform, bring back, this is in the form of maximum frequency, cutoff frequency. Okay, what is the relation between cutoff frequency? Our cutoff frequency is what? Vm is under root 4 beta upon m. Correct? Yes sir. Okay, so this will be 2 under root beta upon m. Okay, so I can write what? Beta by m equal to vm by 2 ak. Okay, so ये सेम रिलेशन नहीं आ गया क्या जो हमारा 1D के लिए था, जो हमारा 1D के लिए था. Okay, this is same relation. Okay, 1D के लिए भी यही था, 3D के लिए भी यही है. So if we calculate the phase velocity, okay, phase velocity vp, that will be omega by k. Okay, omega by k, that is wm a, okay, by 2. Okay, similarly group velocity are same, so omega d omega by dk. Okay, is also vm a by 2, which is also equal to vs. So in long wavelength region, okay, आपका जो 1D क्रिस्टल है और 3D क्रिस्टल है, both are behave like a dispersion-less medium, and for both the for both the crystals, okay, for 1D and 3D, your omega versus k, omega is proportional to k. Okay, that means it behaving like a elastic continuous medium. Okay, so this one, this is your omega. Okay, and this is your k. So the graph between omega k is linear. Okay, that is a one thing. Okay, in low wavelength region. So if you take a continuous elastic medium, उसके लिए चाहे आप लो वेवलेंथ रीजन ले लो चाहे हाई वेवलेंथ रीजन ले लो, ओमेगा के में रिलेशन हमेशा सेम रहता है. ओके, कंटिन्यूअस मीडियम के लिए, इलास्टिक कंटिन्यूअस मीडियम के लिए ओमेगा वर्सेस के ग्राफ इज ऑलवेज लीनियर. सो दैट इज अ डिफरेंस यस्टरडे आई वाज टॉकिंग. ओके, कि एक 1D क्रिस्टल ले रहे हैं और एक कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम ले रहे हैं, उनके डिस्पर्सन रिलेशन में क्या डिफरेंस है. तो हमारा क्योंकि 1D क्रिस्टल क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है. Okay, there is a gap, there is discrete, there is a gaps. Okay, there is a gaps. और कंटिन्यूअस मीडियम क्या होता है, और मैंने ये बताया था कोई गैप नहीं होता. और वो भी मैंने बताया था, डिपेंड करता है कि आप किससे प्रोब कर रहे हैं. ओके, if you are using long wavelength, okay, long wavelength, then your discrete medium also behave like a continuous medium. Okay, if you are using a smaller wavelength, okay, a smaller wavelength, then you will see the effect of your lattice.
ओके लॉन्ग वेवलेंथ के लिए आपका चाहे कंटिन्यूअस मीडियम हो या 1D क्रिस्टल हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके व्हेन यू विल सी नाउ व्हाट हैपेंस इन शॉर्ट वेवलेंथ रीजन. ओके सो नाउ पुट द हेडिंग. Sir, हाँ so can you give example of continuous and discrete crystals? अगर आप खुली आंखों से देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस दिखती है कि डिसकंटिन्यूअस दिखती है? सॉलिड तो कंटिन्यूअस ही दिखता है. और उसी को माइक्रोस्कोप से देखते हो तो फिर क्या दिखता है? लैटिस दिखता है, नहीं दिखता है? दिखता है सर. दिखता है ना, ठीक है ना. तो ऐसे ही आप कैसे प्रोब कर रहे हो किसी चीज को? ओके अगर आप लॉन्ग वेवलेंथ से प्रोब कर रहे हो किसी चीज को, तो उसके लिए वो सिस्टम कंटिन्यूअस मीडियम की तरह बिहेव करेगा. ओके प्रोब मींस ऑब्जर्व कर रहे हो. ऑब्जर्व मतलब अगर आप किसी सिस्टम में लॉन्ग वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे मेरा लैटिस है. ओके मेरे पास सॉलिड है, वी हैव सॉलिड. ओके नाउ इस सॉलिड के अंदर आई कैन प्रोड्यूस लैटिस वाइब्रेशन. लैटिस वाइब्रेशन क्या होते हैं? या तो मैं इसको थर्मल एनर्जी दे दूं, ओके या किसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी दे दूं, बाहर से कोई वाइब्रेटर लगा दूं, तो इसमें वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी. ओके Yes sir. लैटिस विल वाइब्रेट. So Yes sir. if this lattice is vibrating in a higher wavelength region, हम low energy दे रहे हैं. If this lattice is vibrating in high with higher wavelength, okay, then the omega versus k relation is linear for this crystal also. Okay. Okay sir. So that is exactly like a continuous medium. Okay sir. Clear है? Yes sir. Yes sir. Okay. So now just now we have calculated this for 3D also. Now let me derive the relation between beta and Young modulus. Okay, so we have seen for 3D crystal also the relation was same. Now I know the velocity of sound, okay, in a solid is given by y by rho. Okay, whereas y is what? Young modulus of the material. So y is the Young modulus of the material. Okay, Young modulus. Okay, and rho is what? Density. Okay, so say m by a cube. Okay, now just now we have seen what is our vs. Our vs was vm a by 2. Omega m a by 2. Yes sir. Okay, so and we know what is omega m. Omega m is 4 beta m, okay, by 2 a. Okay, so from here I can get the relation between beta and Young modulus. So if I want to derive the relation between beta, so make it a square. So if I make it a square, it will be y by rho. Okay, and this will be equal to 1 by 4 beta upon m. Okay, a square. Okay, so 4 से 4 cancel. Now what is this? This is, we have used small m. So rho is small m. So my y will be now what? M a cube beta a square. Okay, so a square cancel हो जाएगा, will remaining a. So now my beta will be what? My beta will be m भी cancel होगा क्या? m भी cancel होगा. Okay, here we have m also. So now my beta is equal to a y. Okay, that means my spring constant beta, okay, and lattice constant and Young modulus, they are related by this equation. Is it clear? Yes sir. Okay. Now so far we are discussing what? We are discussing now higher wavelength. Okay, let us do for shorter wavelength. Okay, or general expression for dispersion relation. इसको मिटा दूं क्या? Yes sir. Yes, sir. For 2D crystal or 1D crystal, is there anything? So just now I have shown you. Okay, if solid, if it is 3D crystal also, the relation was same. Yeah, but the row will change, right? Yeah, so I'm calculating for solid, na? For 3D solid. Okay, 3D solid. 3D solid, and region is same. Okay. So now
let us do it for short wavelength region. Okay, our second point is short wavelength region. Okay, short wavelength का मतलब क्या है? Now your k is large. K is large. Okay, so what is our relation? W is what? Wm. Okay, sine k a by 2. Okay, so now I want to for shorter wavelength. Okay, because the general expression. Okay, so I can write what? I can write phase velocity vp, that will be omega by k. Okay, so that will be equal to omega wm. Okay, sine k upon 2 by k. Okay, and I know what is vm. What is the relation between wm and vs? What is the relation? What is the relation between a by wm? 2 multiply कर देंगे इसको. Okay, 2 Vs by A. so 2 vs by a. Okay, so I can write wm is equal to 2 vs by a. Okay, and I can also write sine, sorry, so now I can write here wm. Okay, and since we have sine k a by 2 here, okay, I can write k a by 2 here, and similarly a by 2 here. Okay, so I can write now the relation, the phase velocity will be given by vm a by 2. ये किसके बराबर होता है? vs. Okay, so that will be vs. Okay, sine k a by 2 upon k a by 2. Okay, so this is your, say this is equation A. This is your phase velocity in short wavelength regime. Okay, now similarly I can calculate what is the group velocity. So if you say group velocity vg, okay, so what will be d omega by dk? कितना आएगा? So Vs cos k by 2. Okay, so if I differentiate this one with respect to k, that will be vm. Okay, cos k by 2, and that will be a by 2. Okay, so this will become, now this will become, इसको रब कर दूं क्या? Yes. Yes, sir. Yes. So I can write now my vg is equal to vs cos ka by 2. Okay, is it correct? Expression सही है क्या ये? Yes. Sir. Okay, now let us, there's one problem came in exam. Okay, so based on phase velocity, you have to tell me the correct answer. So the question is, okay, what is the phase velocity curve with k? Okay, what is the vp versus k graph? Okay, for 1D crystal, for 1D crystal. Okay, so they have given options. A, option A is okay, this is a phase velocity versus k graph. Okay, so this is the value they have given, omega m a by 2. Okay, 1D crystal with lattice constant A. Okay, lattice constant A, and cutoff frequency this omega, maximum frequency omega. Okay, so this is for 2 pi by A. Okay, this 4 pi by A. Okay, the second option is this vp function of k is given by two pi by A. Okay, this is
4 pi by a k, ओके, एंड इसको मिटा दूं क्या? Yes, sir. So the first one is correct, no? Let me draw C also. Okay, C. Okay, so C is VP K. Okay, so this is VS. Okay, VS 2 pi by A. Okay, and this is 4 pi by A. Okay, चलो तीन ही करते हैं, तीन ही बता दो, चौथा क्यों ड्रॉ करें? इसी में सही है। कौन सा ऑप्शन है? सी सर, सी। सी, सी ऑप्शन है। So this is what? This is a sort. Sin x Sort of. upon, sin x upon x. Okay, they didn't say whether it is a सर ए है सर, ए है सर, सही तो ये ए है सर। तो ए तो साइन, ये साइन बाय एक्स का ग्राफ ऐसा ऐसा आता है क्या? ये साइन का कर्व क्या है? इफ यू प्लॉट साइन sin x by x का तो ये आएगा ना सर। साइन एक्स कर्व का कैसा आता है? ऐसा आता है कि कैसा आता है? कम होता जाता है, पीक कम होता जाता है। हाँ सर, sin x by x जो है ना एक इवन नेगेटिव फंक्शन है, तो नेगेटिव वैल्यू में नहीं जा आएगा। सकता है, ये होगा ना सर। चेक तो करो, ये sin x होगा ना by सर, नेगेटिव जस्ट चेक करो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है। अभी आपको sin x by x का जो आपने बनाया वही आता है। हाँ, बट सर ये क्या नाम कहते हैं, वो नेगेटिव तो हो नहीं जा सकता ना सर। क्यों 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 नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता? अरे हाँ, Not अगर the नहीं net. है सर, x बी by होगा x सर। ना तो इवन होगा सर, फंक्शन हो जाता है। क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आ सकता, दैट इज फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी तो जा सकती है ना। यस सर, वेलोसिटी जा सकती है सर, बी होगा। हाँ, बी ऑप्शन है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है तो सबको? मतलब ये ग्राफ से जज किया। बी, उसने पूछा है कि फेज वेलोसिटी का ग्राफ क्या है विद के, तो वी नो द एक्सप्रेशन फॉर फेज वेलोसिटी विद के। ओके, Yes, yes, so that is sin x by- upon x, so this is sin x upon x. Okay, sir. Okay, so मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, so B is the correct option. Okay, चले आगे अभी। Yes sir. यस सर। Okay, so this was your expression for phase velocity and group velocity, and we can see that both are not equivalent. Okay, in short wavelength region your VP is not equal to VG. Okay, so this is a dispersive medium. For short wavelength behave like a dispersive medium. Okay, so let me discuss now. So this we have discussed this one. तो सर वो VP का साइन रिवर्स क्यों हो रहा है एक्चुअली? VP का साइन का रिवर्स हो सकता है ना, आप एक्सप्रेशन देखो ना। ठीक है, लेकिन VP तो जस्ट ओमेगा बाई के था, ओमेगा में तो एक मॉड भी था ना, मॉड साइन के बाई 2 था। यहाँ मोड था, यहाँ मोड था क्या? यस, ये वाज मोड। ओके, Yes sir. हाँ, so that was sin k by ak. Okay, so it should be positive or negative? It should be positive. Positive. Okay, correct, because we have missed this mod. Okay, So तो ये होना चाहिए ना ऑप्शन। a option होना चाहिए। correct, मोड तो सर, हाँ, मोड तो सर फ्रीक्वेंसी में था ना सर। नहीं तो Velocity तो हम यूज तो उसको अभी भी कर रहे हैं ना उसको। नहीं, तुम ये बात सोचो ना कि अगर मतलब उसका साइन क्यों रिवर्स होगा? यस यस, करेक्ट। ओके, क्योंकि हम तो सर वन मिनट थिंक सर, हाँ। एक और चीज सर, वो आपकी बात एकदम सही है कि हाँ ये, लेकिन के ए बाई 2 जो है वो पाई है हमारा, वो भी तो नेगेटिव जाएगा सर। पाई क्यों है? सर जो के बाई 2 है सर, हाँ हाँ, क्योंकि जो के है और ए है वो तो हमारा सर नेगेटिव भी जा सकता है ना सर। वो कैसे नहीं नेगेटिव, सकता। वो कैसे नेगेटिव जाएगा? और सर वो तो हमने, वो तो ठीक है सर, जब हमने मोड लिया था तो सर हम फ्रीक्वेंसी को देख के ले रहे थे, पहले ही थोड़ा आया था सर मोड। So let me draw the graph again. Okay, so this was my, we are telling this is the graph. Okay, तो यहाँ पे क्या था 2 pi by a, और यहाँ पे क्या था? करेक्ट ऑप्शन उसका बी ही आएगा। 4 पाई यहाँ पे 4 pi by a था। ओके, और नेगेटिव में तो हमने ड्रॉ किया ही नहीं था अभी। नहीं किया था। ये सर नहीं गया था सर। नहीं किया था ना, तो क्या ऑप्शन आना चाहिए? ए की बी? सर बी आना तो चाहिए। बी होना चाहिए मेरे साथ, साइन एक्स बाई एक्स का, क्योंकि सर साइन पे मोड हमने सर फिजिक्स लगा के लिया था, मैथमेटिक्स लगा के नहीं लिया था। हाँ, मैथमेटिक्स sin x upon x. ओके, और ये हम पॉजिटिव में ड्रॉ कर रहे अपन हैं, सिर्फ पॉजिटिव से ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमेशा ग्राफ तो ऐसे आएगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलो
मैं नहीं समझा सर लेकिन मॉड्यूलस वैल्यू है ना तो हाँ, तो अभी हमने हमने ये ग्राफ तो नेगेटिव में तो ड्रॉ था ही नहीं है, अभी तो हम खाली नहीं, लेकिन हाँ। हाँ नेगेटिव में ड्रॉ नहीं किया, लेकिन साइन के का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं जा सकता ना इधर हमने, बिकॉज फ्रीक्वेंसी नेगेटिव का क्या मतलब होगा? साइन का ग्राफ तो अगर इसमें अगर मैं आप माइनस लिख दूं, ओके, के के वैल्यू माइनस लिख दूं, ओके, सो अरे कहीं भी माइनस हो जाए मॉड्यूलस के बाद तो सर जस्ट वेट मिनट, मॉड्यूलस में मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है ना। पाई साइन पाई -1, ओके, तो ये माइनस आएगा तो मॉड तो पॉजिटिव आएगा, ओके ओके। सर So let me check the answer, okay, because एग्जाम का क्वेश्चन आया है, okay, let me check the answer, we'll discuss सर tomorrow. फिर यही वैल्यू हम डिनोमिनेटर में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब तो पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ना। अब डिनोमिनेटर में अरे क्या, के का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, के K- बस पॉजिटिव एक्सिस ही लिया था हमने। k is 2π/a ना। सर वो जो नीचे जा रहा है वो तो vs का वैल्यू नेगेटिव है ना, वो तो वेलोसिटी है। भाई आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे k को रख रहा हूँ 2π/a, यहाँ 2π, ये भी 2π/a, तो ये टर्म क्या है, हमेशा पॉजिटिव तो आ रहा है, ये टर्म जो सॉल्व होकर आ रहा है sin x/x, नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं कोई दूसरा वैल्यू भी ले लूँ 2π से आगे, सपोज दिस वाज वैल्यू, ओके, दिस वाज माय ग्राफ, ओके, दिस वाज माय ग्राफ, अब 2π आगे 4π है, इसके बीच में कुछ दूसरी वैल्यू ले लो 3π/a, ओके, तो वैल्यू तो ये पॉजिटिव ही है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो होगा नहीं है, अगर नेगेटिव लेंगे तो मॉड है ना यहाँ पे। हाँ सर, तो फ्लिप होना चाहिए बस पॉजिटिव ऑप्शन ए होना चाहिए सर। ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, ठीक है। अब इसको फिर कल फिर डिस्कस करेंगे एक बार। हाँ सर मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जब हमने मोड लिया था तो हमने और फिजिक्स देखी थी कि फिजिक्स में ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है कभी नेगेटिव नहीं होती है, बट सर वेलोसिटी इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा था वो मोड नहीं था, वो हमने और फिजिक्स लगाई थी तब हमने मोड लिया था, यानी कि अगर हम वापस आते हैं तो वेलोसिटी पे तो वो मोड हट जाएगा सर, मैथमेटिकली तो सर वहाँ पे मोड नहीं आना चाहिए। Just that. That's what I'm telling ना, अभी इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि लेट अस डिस्कस टुमारो, ओके, आप लोग भी सोचो और मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ और वी विल डिस्कस टुमारो, ओके ओके, दिस इज अगेन, ओके, अभी इस पे क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग, ओके, सो वी विल डिस्कस टुमारो, ओके। सो दिस वाज योर dispersion relation, okay. Now we have seen now here that we have this omega versus k relation, okay, कैसा आ रहा है ये π/a, okay, 1D crystal, this is minus π/a, okay, and we have seen this, my graph is coming like this, okay, minus 2π/a, okay. Now we can see this graph has a symmetry, okay, if I take omega minus k, that is equal to omega k, okay, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ओके, तो दिस इज मिरर सिमेट्री, तो हमको क्या मिल रहा है, एक ही के की वैल्यू के लिए सेम ओमेगा मिल रहा है, ओके, सो देयर आर मेनी के वैल्यूज, लाइक ये वैल्यू, ओके, सब पे ओमेगा सेम है पर के इज डिफरेंट, करेक्ट। आई एम ड्राइंग दिस ग्राफ ओमेगा वर्सेस के, ओके, so this is a mirror symmetry, okay, so I'm getting different same frequency, for same frequencies I'm getting different case, okay, so now I want to calculate how many modes are there, okay, how many ways my crystal can vibrate, okay, that is what is the values of k. Just now we have drawn, this is the continuous medium, this is looking like continuous, okay. Now if I apply boundary conditions, okay, if I take my crystal is finite, okay, so if my crystal is finite, if you apply boundary condition, then what will happen to this k values. So we'll see whenever we apply confinement, okay, we limit our crystal dimension, okay, then what will happen, your k will become quantized, okay. So now put the heading modes. What is the modes? Normal modes, normal क्लास का भी टाइम हो रहा है, just एक मिनट, normal modes, okay, and
density of states. Okay, density of states and density of k states. Density of k states. Okay, so what is the normal modes? Okay, so we return the force equation Fn equal to m d2u upon dt square beta, okay, un plus 1 plus un minus 1, okay, minus 2 un. Okay, this was my equation, and we have solved this equation. So what is the mode? Okay, so what is the definition of mode? So you can write what is the definition of mode. Very important topic, how to calculate density of state. Okay, so normal modes, okay, are the independent solutions. Okay, independent solutions of above equation. The normal modes are the independent solution of above equations, okay, which satisfy given set of boundary condition. Okay, given set of boundary conditions. Okay, now I want to calculate, okay, how many modes are there. Okay, so हमने देखा कि 0 to pi by a, so this was my graph, 0 to pi by a. Okay, 0 to pi by a के बाद में सारे जितनी भी k वैल्यूज आ रही हैं, जितनी भी ओमेगा की वैल्यूज आ रही हैं, they all are repeated. Okay, if I take here, these all values are repeated. तो 0 से pi by a में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसके बाद सारी वैल्यू रिपीटेड है. That means my maximum value of k is what? The maximum value is k is what? Pi by a. Okay, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो रिपीटेड वैल्यूज हैं, वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं है. तो मुझे 0 to pi a के बीच में, okay, कितने मोड्स हैं, कितनी k वैल्यूज हैं, that I have to calculate. Okay, and that can be calculated using boundary conditions. Okay, so there are two type of boundary conditions. Number one, that is called fixed boundary condition. Okay, fixed boundary condition. Okay, and other is periodic boundary condition. Periodic boundary condition. Okay, हम क्या करेंगे, सिस्टम के ऊपर दोनों तरह की बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे. ओके, एंड विल सी कि कोई भी बाउंड्री कंडीशन ले लो, चाहे फिक्स बाउंड्री कंडीशन ले लो, चाहे पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ले लो, आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमेशा सेम आएगा. ओके, सो इफ देयर इज टाइम, आई नीड 10 minutes more. Can I continue 10 minutes more? Yes, sir. Okay. So let us start with the fixed boundary conditions. Okay, what is fixed boundary condition? So suppose I have a crystal, okay, one dimensional crystal. Okay, I am taking, let us take n plus 1 atom. Okay, so I am taking crystal, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8. Okay, so say this is my n is equal to 0. Okay, say this is n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atoms. Okay, now I am taking fixed boundary condition. तो फिक्स बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है कि मेरे जो एटम्स हैं, कॉर्नर एटम्स हैं, दे आर फिक्स्ड. ओके, सो से दिस इज फिक्स्ड. दे आर फिक्स्ड मतलब मोशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब SHM नहीं कर पा रहे. हाँ, that they are not vibrating. Okay, the amplitude of vibration is because they are fixed. So amplitude of vibration is 0 at the ends. Okay,
Okay, sir. They are both fixed. Okay, now the length, okay, I can write length of the crystal equal to Na, कितने atoms हैं, okay, into A, lattice constant is A. Okay, so here I have 8 atoms. तो length कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 n 6 minus 1 है 7 sir. 8. Okay, 8 है. Length of the crystal, I'm talking length of the crystal. A is a lattice constant. लेकिन अगर n एटम है तो n minus 1 अच्छा n plus 1 एटम है. अभी देखो ना, n plus 1 atom है ना? Yes sir, sir. n plus 1 atom. Okay, so this is you can count ना, एक A, B, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Okay, so the length is 8A. Okay, now since these atoms are so these atoms are fixed. Okay, so इसमें जो भी wave produce होगी वो क्या होगी? Standing wave होगी ना? Yes sir. Okay, Yes. so the length of the crystal is L. Okay, so the solution, okay, the whatever waves produce here, that will be standing waves. Okay, so standing waves का कैसे लिखते हैं? Standing waves, that will be u0 sin kx, okay, cos omega t या sin omega t या e power exponential omega t. So this is the amplitude of standing wave. ऐसे लिखते हैं standing wave. Yes sir. Yes sir. Okay, so now suppose I am taking some nth atom. Okay, so if I am taking nth atom, so I can write my un. Okay, this is the general u0 sin, okay, k na sin omega t किसी भी nth atom के लिए. I can write this equation as x is equal to na. जैसे मुझे फिफ्थ एटम के लिए लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? a x क्या हो जाएगा? a 2a 3a 4a 5 फिफ्थ है. ओके, सपोज आई वांट टू राइट फॉर फोर्थ एटम, so this will be a 4a. So if I want to write for nth atom, okay, the amplitude can be written as u0 sin kna sin omega t. करेक्ट है कि नहीं है? Yes sir. Okay, so now Yes sir. okay, now our last atoms, okay, they are fixed, so I can write my u0, the vibration of 0 atom equal to vibration of nth atom equals to 0. ऐसे लिख सकते हैं? हाँ. Sir, can you just repeat last statement, sir? Connection चला गया था. Sir, can we write the equation in terms of something other than u0 because we are using two So symbols? Please. shall I write a? Yeah, anything. Okay, okay, so I am writing here the amplitude, because this is the fixed points, the end points are fixed. Okay, so whatever wave will produce here, okay, that will be standing wave. Okay, so standing wave will not transfer energy, that will simply oscillate. Okay, so now if I want to write the amplitude of nth atom, okay, that will be a sin k na sin omega t. Okay, for example, just now I told you if I want to calculate the amplitude of fifth atom, okay, so for fifth, so this is the x direction, so this x will be a 2a 3a 4a 5th. Okay, in this way Yes, sir. we can write the amplitude of any atom. Okay, Yes, sir. now since end points are fixed, okay, so for what I can write now, that my un is 0, so un को कैसे लिख सकते हैं? That will be a sin k na sin omega t equals to 0. Okay, so this will give me what? Sin k na equals to 0. Okay, and if I solve it further, okay, if I solve it further, this will give me now what? K na equals to what? Sin n pi. N pi. Okay, The and UO and UN are the boundary or what, sir? u last atom है, un capital N. Okay, यहाँ पे Yes, मैंने sir. 8 atom लिए हैं. In general we can take n atoms, n plus 1 atom, so last atom will be nth atom. Okay,
Okay, sir. Okay, So sir. first time I'm taking 0. So now it will be what? KNA equals to n pi. Okay. So my K value will be what? K will be n pi, m pi. Okay, m pi upon na. ठीक है, where m क्या है? M is 0, 1, 2, 3 up to n. So Yes, sir. okay, so now if I write the k values, so the k values will be what? K value will be 0. Okay, then na is equal to L. Okay, so क्या हो जाएगा? Pi by L. Pi by L. Pi by L. Then 2 pi by L. 2 pi by L. Okay, then I told you the maximum value of k can be what? Pi by a. Okay, so I can go up to maximum n pi. Okay, n cancel, literally pi by a. Okay, so I can go in such a way up to n pi by L. Correct? Yes, sir. So these are the different modes. Okay, now out of these two modes 0 and n pi by L. Okay, अगर मैं आपको देखूं un का एक्सप्रेशन लिखूं, what was my un? My un was a. Okay, what was sin? क्या एक्सप्रेशन था? sin क्या था? k KNX. Sin omega. sin omega t. Okay, this was the expression. Okay, so now if I take k is equal to 0, k is equal to 0 का मतलब क्या हो जाएगा? If I put k is equal to 0, then un will be equals to 0, isn't it? Yes, sir. तो un is equal to 0 का मतलब क्या है? No vibration loss. नो वाइब्रेशन. आप कोई भी एटम ले लो, एटम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, all are stationary. Okay, so we will not take 0. Okay, we will not consider here 0 value, because 0 value shows that all the atoms are in no vibration condition, no motion conditions. Okay, so only I will take. So similarly, if I take n pi by L, if I put here k equal to n pi by L. Okay, n pi by L. So what will become now? So n a. Okay, so let me k equal to n pi by L or k equal to n pi by na. Okay, so this is k equal to pi by a. So what will become if I put n pi by L? Then what will become? यहाँ से क्या आएगा हमारा? बताओ. That will be sin simply. Huh? Sin is equal to pi. Then pi. Okay, so this expression also will give me the same condition what we are getting with 0, that all the atoms are in rest state. Okay, so out of this n plus 1 solutions, okay, we are getting from 0, pi, 2 pi, n pi L. Okay, these two k values will reject. Okay, so that means what I'm trying to say here, that if we apply a limitation, okay, or boundary condition, then my k can have only these values. My k can have values pi by L, 2 pi by L, okay, up to n minus 1 pi by L. Okay, that means there are n minus 1 modes only. Okay, there are n minus 1 modes. Each value of k represent a mode. Okay, मोड का मतलब क्या होता है? एनर्जी. ओके, और एनर्जी किससे रिलेटेड है? के से. ओके, और के किससे रिलेटेड है? वेवलेंथ से. ओके, सो ईच वैल्यू ऑफ के, ओके, और ईच वैल्यू लैम्बडा represent a mode. Okay, so this is, so if in crystal we have n plus 1 atoms, okay, then we have only n minus modes for that 1D crystals. Okay, now in general n is very large. Okay, in general n is very large, so we can neglect one in comparison to n. So we always say if there are n lattice point, okay, so there are n modes. किसी क्रिस्टल में जितने भी एटम्स होंगे
उतने ही मोड्स होंगे। ये क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ओके, Yes, sir. so here we have n minus 1 mode. Now I want to calculate. सर हाँ सर सर हाँ सर अभी आपने कहा कि जितने भी एटम होंगे उतने ही मोड्स होंगे, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? बट सर अभी तो आपने अभी आपने बताया कि n+1 एटम है, तो हमारे टोटल मोड्स क्या है? n-1 मोड्स है। ओके, n-1 मोड्स है। ओके, पर इन जनरल क्या होता है कि n बहुत लार्ज होता है ना क्रिस्टल में, यस सर एवोगैड्रो नंबर, हाँ सर तो 1 तो कैंसिल कर सकते हैं ना। ओके, सो Yes, sir, yes. रफली लैंग्वेज में वी कैन से कि जितने एटम होंगे उतने ही मोड होंगे। ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ स्टेट। ओके, डेंसिटी, अब देखो ये क्या है, ये के वैल्यूज है, तो एक मोड का इंटरवल कितना है? डेल्टा के कितना है? डेल्टा के Sir, कितना है? π/l। π/l। ओके, सो ये एक मोड हो गया, फिर इसके बीच में 3π/l आएगा, 3π/l आ गया, तो दूसरा मोड का, तीसरा मोड, फोर्थ मोड, ऐसे करके। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ स्टेट। ओके, n से डेंसिटी ऑफ स्टेट, सो से डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे लिखते हैं? अगली क्लास में सर बस हो गया, बस dn/dk। ओके, तो नंबर ऑफ मोड्स लिखने हैं मुझे, नंबर ऑफ मोड्स कितने लिखेंगे? नंबर ऑफ मोड्स k वैल्यू डिवाइड बाय π/l, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर मुझे यस सर। अगर मुझे k की वैल्यू पता है, सम आई हैव सम k वैल्यूज, ओके, सम k वैल्यूज, ओके, इतना रेंज है k का, जैसे π/a पता, k का रेंज पता है, और मुझे एक मोड का वॉल्यूम पता है, यहाँ पे लेंथ पता है। अगर मैं एक लेंथ से k को डिवाइड करूंगा तो मुझे मोड्स नहीं मिल जाएगा? कितने मोड्स हैं? यस सर। Yes, sir. Okay, so this will give you the number of modes. Okay, now I want density of states, gk dk, that is what? Gk, that is equal to dn upon dk. Okay, so this become what? This become lk upon pi. Okay, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, that will be your l upon pi. Okay, so this is the density of state, dk equals to L upon pi dk. Okay, so this is the expression for density of state. Okay, so in fixed boundary, yes, कैपिटल इनका एक्सप्रेशन का अभी अपने जो फिर से जरा बताएंगे वो कैसे है? this is the number of modes, number of normal modes. Okay, number of modes. So number of modes कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक मोड का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे तो लेंथ है, 1 डायमेंशनल है, तो एक वॉल्यूम का लेंथ है π/l, मेरे पास k लेंथ है k स्पेस में, तो टोटल लेंथ को अगर मैं डिवाइड करूंगा π/l में, तो मुझे नंबर ऑफ मोड्स नहीं मिलेंगे। जैसे मेरे पास में लेंथ है 8, और जो k स्पेस का जो एक k स्पेस का एक मोड का वॉल्यूम है 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे मोड? 4 नहीं हो जाएंगे? इफ आई हैव k वैल्यू इन k स्पेस, इफ आई हैव लेंथ k, और एक मोड का लेंथ जो है इंटरवल, अभी दिखा हमने इंटरवल, ओके, दैट इज π/l, तो एक इंटरवल को अगर मैं लेंथ में डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने मोड है? that I will get n. Okay, so here the n is lk upon pi. Now I want density of states. Okay, so dn/dk, that will be l by pi dk. Okay, so this is the expression for density of state for fixed boundary conditions, if our boundary conditions are fixed. And tomorrow we'll see now that number of modes in periodic boundary condition. periodic boundary condition लगाएंगे तब density of state का expression same आएगा. तो चाहे हम लोग फिक्स बाउंड्री कंडीशन ले या पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ले, हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट हमेशा सेम आएगा। ओके, और डेंसिटी ऑफ स्टेट का यूज क्या है? इफ यू नो द डेंसिटी ऑफ स्टेट, ओके, वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एनर्जी ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। तो सो वी आर डिस्कसिंग दिस लैटिस वाइब्रेशन हियर in order to calculate thermal properties. Okay, so if we know the energy, we can differentiate the expression of energy with respect to temperature, and we can calculate the specific heat. Okay, is it clear? Yes, sir. Periodic Yes, means sir. you have a ring of atoms. Hmm? Periodic means you have a ring of atoms or something. Yes. Periodic means you have ring of atom. Okay, here we have taken the crystal with a finite length. Alok sir is waiting for the class. Oh, okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.
हम्म